आप जब बोलेंगे तो स्टार्ट कर देंगे. You may start, sir. ठीक है. Okay, good afternoon, friends. So welcome back again for the second class of your foundation paper, Fundamental of Business Economics and Management. What we are going to discuss today. Today, I'll explain you the production theory and the market mechanism. So what are different type of markets? What are different forms of market? What is the production theory, cost theory, and all those stuff we'll be covering in today's session. But before we begin to the today's topic, it is very important for us to recap whatever we have discussed in last session. So I'm quickly taking you all people through the slides that we discussed during our last class. You just recapitulate everything that we have discussed. So a very quick snapshot, which will help us to further understand today's topic. So if you recollect, last time we discussed some basic concepts of economics, the demand theory, the supply theory, the elasticity part, and the business environment. I'm just taking you quickly through the all those discussed stuff of our first class. So initially we started with the meaning. What is economics? It's a process of meeting the unlimited needs of human being by effectively and efficiently utilizing the available scarce resource. Then we talked about the credit of certain economists who are also regarded as the pillar of the subject matter of economics, starting from Adam Smith to J.M. Keynes. And so we had given the various definition, wealth definition, welfare definition, scarcity definition, growth definition. I asked you to remember the name of the people behind each of the definitions. So whenever it comes wealth definition, suppose you may get an MCQ type of question, who was the responsible for giving wealth definition, then you must able to answer it Adam Smith or JB say, right? So you must remember the name of all these gentlemen. You should also remember the books or the work that they have published. So these are the things that we discussed last time, the detailed definition of all the four different type of definition of economics: growth, wealth, scarcity, and welfare, and the contribution of the respective economists by their work. Then we talked about what is the process of economics. The process of economics involves around, finding the solution of three basic questions, which are also called as central problem of economics: what to produce, how to produce, and for whom to be produced. And then we discussed whether this subject matter is a stream of science or arts. And I asked you all people, it remains both. Of course, it's a science that needed acumen of some skill also. Then we move ahead with some of the concepts, some of the terminology that we need to come across many a time whenever we are dealing with economics. These were goods, utility, marginal utility, total utility. I think I explained you all these words in detail. And then we started with law of diminishing marginal utility, what Alfred Marshall has given. The important point here is to understand to what extent you can increase the supply, or you can increase as an economist the production of the article beyond the point where the marginal utility goes negative. There is no point of increasing the supply. That is the maximum supply you can provide in and at any given point of time to the consumer in the market. So DMU has its own significance. There were certain assumptions when this DMU were made. We discussed about all these assumptions. We thought that there is no change in the consumption of goods from the consumer end, and it remains constant, and that is perhaps the reason why marginal utility always diminishes. We also thought of the assumption of the taste and preference. Whatever taste and preference of consumer is today, that will remain static throughout his journey. That doesn't happen actually. We talked about exceptions. What are the goods? What are the products? What are the commodities where law of diminishing marginal utility does not apply? Some examples are collections, hobbies, miseries, lotteries, etc. and etc. And then we talked about, why this law of diminishing marginal utility is important. We discuss about value paradox. How can you identify the value of a commodity? The maximum utility will tell you what should be the value, what should be the price of the ultimate price that a consumer is ready to pay, and what should be the limited minimum price at which the supplier should sell. Because once the DMU is getting negative, no, then even if you reduce the price, the demand is not going to increase. So DMU plays a vital role
in which help it to work as a basis of all economical laws. It also help for the policymaker like government agency regulators to fix up the taxation and for the wealth definition. We talked about then demand. So what is demand? Demand is quantity of good desired, but it is just not all the quantity of good that human being desired. Rather, it is those quantity of goods which human being desired and they have the paying capacity. So always in economics, demand is, the quantity which is backed by purchasing power, that only can be called as demand, otherwise not. I want to, get everything in my life, but I don't have the consumer surplus. I don't have money to purchase it. Then this demand of mine can be just a thought, imagination, cannot be termed as economical demand. So whenever we call that demand is quantity of desire, we also has to remember always that it has to be backed by purchasing power. Then we discuss about the determinants of demand, price of relative goods. In relative goods, there are two type of relative goods. I discuss about it, complementary goods and supplementary goods. Income of the population. By population, I mean consumer. Taste and preference, the total size of the population. Suppose there is all of a sudden in your city the migrants do come, then obviously it will impact the demand. Size has increased, or all of a sudden a lot of immigration happens, then what will happen again? There will be decline in the demand. So population also do matter, and the climate weather conditions. These are the determinants of demand. This is how we try to explain the law of demand. As the price drops, the demand increases, and as the price rises, the demand decreases. So it has a relationship. Quantity of goods demanded has an inverse relationship with its price. If price increases, demand will reduce, and if price reduces, demand will increase. Then we talked about individual demand schedule and market demand schedule. Individual demand schedule means the total demand at various price that can be measured for one unit, one consumer. You can call it as individual demand schedule. And if we do the sum total of all the demands which can be generated by all the population in a market at any given point of time, that becomes total market demand. What are the factors that affect law of demand? Primarily, there are three factors: price of the commodity, income of the population, taste and preference of the population. Uh, uh, Individual demand and market demand we have discussed. Why there is a reason that demand always falls? It is because of the determinants, the factors, maybe because of diminishing marginal utility and all the factors of demand. Then we talked about certain exceptions. What are the exceptions where law of demand does not follow? That means even if you increase the price, ideally as per law of demand, what should happen? The demand should reduce as we increase the price. But in certain goods, in certain category of consumption, this law of demand do not prevail. And what are those conditions? Given paradox is one of them: speculation, conspicuation, shares, or when you invest in shares, or speculative market, bandwagon effect, Veblen effect. I think we talked about all this. Okay, for example, given paradox, anything which is essential for living, that is bare minimum requirement. खाने के बिना तो रह नहीं सकते. Now, in this case, even if you increase the price, the demand is not going to decrease. Likewise, I had given you examples of all these exceptions. For example, Veblen effect, where a consumer has a false idea. Now, if you buy iPhone, even the price of iPhone increases, you still buy it because you have a fake idea that it is coming from the Apple, so the quality would be the ultimate. That's what is called Veblen effect. And likewise, I think I discussed about all the exceptions. Then we talked about types of demand. There are three types of demand. If you recollect, we discussed about all these three demand: price demand, income demand, cross demand. What does it mean? It means the relationship that demand of a goods or commodity is being shared by the other factors. So three factors: price factor. If we try to study how much demand has increased or decreased in change in the price of that commodity, we call it as price demand. Then if the income of consumer increases or decreases, there will be an impact on demand. So what is the relationship between the consumer's income
and the quantity demanded in the market that we study under the income demand. And cross demand means if there is some change which is happening in the relative goods. So suppose the price of complementary goods has declined, then all of a sudden, in spite of not reducing the price of original good, all of a sudden the demand of original good may increase. And if suppose the price of substitute goods increases, then without even reducing the price, the demand will increase. So these are the three types of demand which tells us the relationship between price of the commodity, the price demand, income demand, the income of the consumer and the demand of the commodity, and cross demand, anything which is happening to the relative goods and change in the demand of the original good. Right. Then we discuss about what is change in demand and what is demand shift. Change in demand means if you see this law of demand, change of demand means from point A to point E. See, the demand quantity is changing. That means without changing any other factor, if the price of a commodity is reducing and the demand is increasing, so to what extent it is increasing? What is the change? Now, this change, when we study this change, in relation to the price of a commodity without changing any of other determinants of demand, we call it as change in demand. And what does we mean by shift in demand? Shift in demand means this entire curve which is sloping from point A to point E, it either shifts upward or it comes downward. So the entire demand schedule, when it is changing, then we call it as shift in demand. This happens because of other factors. So just one thing you have to remember when it comes to change in demand and demand shift, wherever there is a change in demand, it is the change of quantity happening because of change in price. And whenever there is a demand shift, the entire curve is shifting either rightwards or leftwards, then it is because of the other factor, not the price. Okay. Then we talked about supply. Supply means the goods which a producer is willing at a given price. Again, we need to remember that every supplier, कोई भी मैन्युफैक्चरर है, कोई भी अगर धंधे में बैठा हुआ बिजनेस कर रहा है, कुछ बना रहा है, तो उसकी तो इच्छा यही होगी ना कि मेरा सारा माल बिक जाए. बट दैट इज नॉट सप्लाई फॉर अस. व्हाट इज सप्लाई? जो मार्केट प्राइस फिक्स करती है, उस प्राइस पे प्रोड्यूसर कितना गुड्स बेचने को तैयार है. सो द डेफिनेशन इज एब्सोल्युटली क्लियर. वी डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल on our first class, that the quantity of goods which a producer is willing to sell at any given point of time on the price that he is getting from the market, that quantity can only be called as supply, not all desire of the quantity of the producer which the producer is willing to sell. Right. Then we talked about law of supply. Again, if you see the relationship between the quantity that a producer is ready to supply and its price is directly proportional. Unlike in the law of demand, the relationship of price and quantity demanded always have inverse relationship. But in supply, what happens? It is opposite of it. That means if price increases, supplier is ready to sell more goods. And if price reduces, supplier is not willing to sell more goods for obvious reason. आप अगर business कर रहे हैं, आपको ज्यादा मुनाफा मिलता है, ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो आप सप्लाई ज्यादा करोगे, ज्यादा बेचना चाहोगे. और अगर मुनाफा कम मिलता है, so you are not very much willing to sell that goods. So for this reason only, the law of supply follows the direct relationship between the quantity that a producer can supply at any given point of time. So if price increases, producer is willing to sell more, and if price is reducing, the producer is willing to sell less. Unlike demand, there are other determinants of supply also. So what are these determinants? We call it as factor of supply, price of commodity itself, price of raw material. जो बनाएंगे रॉ मटेरियल अगर ऊपर नीचे होगा तो वो भी इम्पैक्ट करेगा सप्लाई को. टेक्नोलॉजी डेट यूज, ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस है कि कैसा है, वेदर कंडीशन और गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन. आई थिंक वी डिस्कस ऑल अबाउट दिस in detail. Then we talked about the supply schedule. Unlike demand schedule, supply also has two different type of schedules. What is it? Individual supply schedule and total market supply schedule. Now, what is individual supply schedule and what is total market supply schedule? अगर एक given point में एक producer है, वो अलग अलग price पे जितनी quantity supply करने को तैयार है एक commodity की, उसको हम बोलेंगे individual supply schedule. And total market supply schedule उस commodity के जितने producer हैं, वो सब लोग अलग अलग प्राइस पे कितना क्वांटिटी देने को तैयार है, मार्केट में बेचने को तैयार है. दैट इज कॉल्ड टोटल मार्केट सप्लाई शेड्यूल. अनलाइक डिमांड,
supply also has two type of change. One is change in supply and the other one is shift in supply. So what is change in supply? Suppose at different prices, as you can see from this graph, 500 पे जो है करीब 5 यूनिट या 10 यूनिट बेचना चाह रहा है, 1000 रुपए पे वो 20 यूनिट बेचना चाह रहा है, राइट, 1500 पे करीब 30 यूनिट बेचना चाह रहा है, एंड सो ऑन. सो इफ यू सी द quantity which a producer is willing to change, sell at a given price, this different quantities at different prices are called change in supply. और जब ये पूरा कर्व ऊपर या नीचे हो जाता है, लेफ्ट या राइट आ जाता है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, कि ठीक है उसी प्राइस पे थोड़ा ज्यादा भी सप्लाई करने को वो तैयार है. पहले 500 पे 5 ही देना चाहता था, अभी 500 पे 10 भी बेचना चाहता है या 2 ही बेचना चाहता है. That can happen because of change in any of the factor. Then the entire curve shifts either upward or downwards, right? That we call it as shift in supply. Okay. Then we talked about what is the equilibrium stage. Equilibrium stage is a price and quantity where law of demand, the demand curve and supply curve meets. जैसे कि आप ये ग्राफ देख रहे हैं, हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था. पॉइंट ई पे देखो, ये वो क्वांटिटी है, क्यू क्वांटिटी है, और प्राइस वो है जहां पे मार्केट इक्विलिब्रियम है. मतलब इस प्राइस पे सप्लायर जितना प्रोड्यूस करके मार्केट में रिलीज कर रहा है और कंज्यूमर जितना परचेज कर पा रहा है, वो दोनों मीट करते हैं. सो दिस हेल्प अस इन प्रॉपर price determination, the worth of or value paradox, the worth of the goods, what is the optimum price, what is the optimum quantity which can satisfy both consumer and producer, and it also helps us to determine the value paradox of any goods, any items, economics. It also helps us to bring down the economies of scale. Economies of scale का मतलब क्या होता है? Economies of scale means the efficient use of all the factors of this producer and market dynamics, where there is no wastage and there is no excess. That we call it as economies of scale. Then we talked about elasticity. So there are two types of elasticity: demand elasticity and supply elasticity. What is this elasticity? Elasticity means the degree of change which is happening either in demand, if we are talking about demand elasticity, or in supply, if we are talking about supply elasticity, with respect to the factors of demand or supply. Okay, we talked about different type of elasticity. So on basis of price, there is price elasticity. On basis of income of the consumer, there is income elasticity. On the basis of the change in demand or supply because of something happening to the relative goods, we call it as cross elasticity. Now we also discuss about type of elasticity based upon the measurement. जब हम ये degree of change in demand किसी भी commodity का डिग्री ऑफ चेंज इन एनी ऑफ अदर फैक्टर, मान लो प्राइस इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं, तो प्राइस चेंज हुआ 10% और डिमांड कितना चेंज हुआ. जब इसका कंपैरिजन करते हैं तो वी गेट अ मैथमेटिकल वैल्यू. By measuring we get mathematical value. Now based upon this mathematical expression, we can also have the classification of elasticity. If this degree of change in demand or supply is equal to the change in degree of price or any of the factor, income or cross elasticity, then it is called as unitary elasticity. मतलब जितना टका प्राइस चेंज हो रहा है उतना ही टका जो है क्वांटिटी भी चेंज हो रहा है, ना ज्यादा ना कम. That is what is called unitary elasticity. What is perfect elasticity? Perfect elasticity का मतलब होता है कि change in demand is beyond, काफी unlimited है. It is not defined. It is proportionally exceptionally high than the change in price. तो प्राइस 5 रुपया पड़ा लेकिन डिमांड पता नहीं कितना बढ़ गया, राइट? देन इट इज परफेक्ट इलास्टिक कंडीशन, मतलब कि वो commodity का डिमांड जो है all of sudden बढ़ गया, which cannot be designed. So normally it happens with the necessity goods. Then relative elasticity. Relative elastic elasticity का मतलब क्या होता है? When the change in demand or supply is less than 1, then we call it as relative elastic elasticity. What is perfect inelastic? Perfect inelastic means there is no change. तो प्राइस का चेंज होने से डिमांड में कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है. There is absolutely no impact. It is called perfect inelastic elasticity. We also talked about relative inelastic elasticity. Means if there is a
change in price, then the change in demand is more than one. Then it is relative inelastic elasticity. Okay, so this all thing we discussed last time, and then finally we also talked about how can we measure the elasticity. So there are four methods: percentage method, total outlay method, point method, arc method. अ, सारे का हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे। परसेंटेज मेथड मेथड में क्या करते हैं, आउटले मेथड में क्या करते हैं। परसेंटेज मेथड में नॉर्मल हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं कि प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, डिमांड में कितना चेंज हुआ, और दोनों का प्रोपोर्शन निकाल देते हैं। जो वैल्यू आएगी एज पर दैट वी कैन डिफाइन वेदर इट इज यूनिटरी इलास्टिक और परफेक्ट इलास्टिक और इन इलास्टिक, राइट। टोटल आउटले मेथड में क्या करते हैं, हम एक्सपेंडिचर का नेचर देखते हैं कि जब प्राइस चेंज नहीं हुआ था तब कितना खर्चा करता था, और जब प्राइस बढ़ गया, राइट, तब उसका खर्चा कितना बढ़ गया। तो एंड देन वी कंपेयर, इफ इट इज रिमेन सेम देन देयर इज नो चेंज, यूनिटरी हो गया। अगर वो ज्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा, और अगर उसका एक्सपेंडिचर कम हो गया तो इन इलास्टिक हो जाएगा। सो वी कैन आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इट इज बाय हैविंग द टोटल आउटले मेथड। पॉइंट मेथड में हम जो है वो डिमांड और प्राइस के पॉइंट्स जो है अलग अलग प्राइस पे डिटरमाइन करके उसका मेजरमेंट करते हैं। आर्क मेथड में ग्राफ में उठा के ग्राफ के बार को हम मेजर करते हैं, दोनों का प्रोपोर्शन निकालते हैं। सो वी कैन यूज एनी ऑफ दिस मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ elasticity. Percentage method, normal arithmetics, total outlay method, checking the nature of expenditure by the consumer and identifying the elasticity. Point method, taking the proportion of lower segment with that of upper segment, which will give us the point method. And arc method, we just check the proportion of both the changes, the price change and the demand change on the graph, plotted graph. Now, what are the subject matters of economics? This also we dealt last time. There are four areas that economist is interested to deal with. The first one is production. क्या सामान बनाए, कितना बनाए, किस quantity में बनाए, कौन सी technology use करें. All these are called as production. The second one is market. इस प्रोडक्ट को जब बनाएंगे तो इसका तो कहीं पे सेल भी करेंगे ना. So what is that area and how this market functions, that we try to understand in the market concept. Exchange. Exchange means कि अब ये गुड्स हमने बना लिया, मार्केट तक पहुंचा भी दिया, अब कंज्यूमर खरीदेगा और बायर को पैसा मिलेगा, तो ये एक्सचेंज कैसे होता है, व्हाट आर द रूल ऑफ एक्सचेंज. Money comes in picture, so that we try to understand the entire mechanism in exchange theory. And the last one is distribution. ये सब होने के बाद जो exchange का revenue आया, जो पैसा आया, वो पूरे all the stakeholders of economics में कैसे distribute होता है. So how it is distributed among all the stakeholders of geography or of a nation or of a region, and that we try to understand in distribution mechanism. So these are four typical subject matters of economics: production theory, market theory, exchange theory, and distribution theory. We will try to deal with all of them one by one. And the last part that we discussed in our last class was the business economics environment part. So business environment also plays a vital role. So as a student of economics, you must be aware about, what are the environment in which any business is operating. So typically there are two type of environment. Internal environment. Internal environment हमने बात की थी, are the factors that a company or a producer can control, a business can control. That is what is called internal environment. Or external environment, the factors which cannot be controlled by the business itself. So what should be the strategy with both the environment? With internal environment, we should influence for bringing more result and reducing wastage. जितने भी इंटरनल एंड फैक्टर्स होते हैं उसका हम इस तरह से यूटिलाइज करें एज ए इकोनॉमिस्ट, एज ए स्टूडेंट ऑफ बिजनेस, कि रिजल्ट्स ज्यादा मिले और वेस्टेज कम हो. एंड व्हाट शुड बी अवर स्ट्रेटेजी विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? देयर इज नो स्ट्रेटेजी, वी हैव टू अडेप्ट. जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमको जो है अपनी प्रोडक्शन और अपनी सेलिंग और अपना कंजप्शन वगैरह करना पड़ेगा, राइट. सो व्हाट आर डिफरेंट बिजनेस एनवायरमेंटल टूल्स, हम इसके बारे में भी डिस्कस किए थे. SWOT, this is the tool which help us to understand both internal environment and external environment at a glance. At a glance हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से internal environment है on which the business is operating, and what are the external environment on which the
is operating and has to adapt. Strength and weakness are internal in nature. Opportunity and threat always. फिर हमने दो टूल और की बात की थी, पेस्टल और वुकाफो. These are the tools which help us to understand the external business environment. Okay. Pestle ka full form, we discussed about this. Wukafu ka full form, we also discussed about this. So this was all the thing that we had in length discussion. We tried to understand in our last session. I recap everything because it is very important for us to recap everything, and in a short way, it will also help you all people to refresh all your memories and relearn everything that we have discussed in the last class. Now, may I have your attention, please? Now we will discuss about the production theory today and the market mechanism. What are market? What is market? What are different forms of market? So I request you to pay attention wherever it is required. You can just jot it down. Anyway, the slide is being shared, so it might be uploaded on your Teams. You can download from there also. Absolutely no problem. So let's start. Just give me a minute. Let me have a sip of water. Right. So let's start. These are the two concepts which I am going to discuss today. The first one is production theory and the second one is market. So let's start with production theory first. Production theory, as the word production, the theory is something which is related with the entire process of production. So it is important for us to understand what is this production is all about. Now, production, by production, I mean the process of creating a goods that sold in the market. Now, everything that we good that we prepare is not production. What is production? Only those goods which are being created for the purpose of selling it in the market. For example, your mother is working in kitchen, right? She is using flour, atta flour, and then she is preparing chapatis. Now these chapatis are not meant to sell in the restaurant, but she is preparing all chapatis for you people, for herself, for us to eat. Now this chapati cannot be called as production, but if a chef is preparing these chapatis for the purpose of selling it in the restaurant, then it can be called as production. So you need to understand that production is not the creation of all type of goods, but by production in economics we means only those created goods, only those created goods which are intended to create for the purpose of selling it in the market. And what is the different process which was involved during the entire process of goods creation? So production is actually creating utility. Right. Now, if mother is cooking chapatis, she is meeting just the domestic utility. I mean, that is the routine work for us, for her, or if your dad is cooking chapatis, he is cooking for making you all people happy, right? But there is no money involved in the transaction of these chapatis in your house. But when a chef is producing any foods and selling it in the restaurant, then the chef is actually creating utility for the buyer. Buyer is paying something and the buyer is getting the satisfaction, right? Uh, so you can also say that production is actually creating utility for the consumer. Whenever we create utility for the consumer by producing either goods, commodities or services, we call that production is in place. So let's understand some of the important terminology related to production. Now, what are this? This is the first of all product. Product means goods or services which can be sold. So simple understanding, whatever goods or services that we produce, which has some utility for which a consumer is ready to pay something. So any product, any services that can be sold for money, that can be exchanged in the market in return of something can be called as product. Now there are three concepts of product which are involved in the entire production theory.
The first one is called total product. The second one is called average product, and the third one is called marginal product. To understand this total product, average product and marginal product, it is important for us to understand first the factors of production. So I'm just quickly taking you through to the factors of production, and then we will come back to that three different type of products: total product, marginal product, and average product. So what are factors of production? Typically, there are four factors of production: land, labor, capital, and organization. So for creating any good, right, for producing any type of services or good, you require all these four factors. Without any of this factor, you cannot produce any product, any good, or any services. Now let's go back to our understanding of three types of product: total product, average product, and marginal product. Starting from total product, at any given point of time, you know, by utilizing all set of factors of production that I was talking about just now, I have explained you. So when we are utilizing all these factors of production, we are getting some quantity of product, maybe 10 unit, 15 unit, 20 unit. So what is that total unit of product that we are getting out of all the factors of production? That is what is called total product. Now let's come to average product. Now average product means total product divided by this number of factors. So in land, suppose I have used two different type of resources input. Labor, suppose I have deployed 50 different labors. So whenever we are trying to identify per unit factor product, then we call it as average product. So what we do, we divide total product with respect to number of units of any of the factor of production deployed to get average product. And let's come to the last one. What is marginal product? Marginal product means what is the incremental increase, you know, in output when we increase any of the factor by 1 unit. So suppose there are 5 employees, 5 workers who are producing 50 unit of pen in 1 hour. Now if you increase 1 unit of workers, so 5 की जगह 6 कर दिया. If I have increased 1 unit of workers, so one factor of production has an incremental rise. So after additional increase in one factor of input, one factor of production, what is the change in the total output? तो ये 50 का मान लो 55 हो गया, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो गया? बिकॉज ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर हमारा पेन का प्रोडक्शन 5 यूनिट एक्स्ट्रा हो गया. सो दिस 5 बिकम्स मार्जिन. नाउ दिस टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिन, understand us for all of us the entire production theory mechanism. What is the relation which is being shared by all this in short run production or long run production? Okay, that we will discuss later on. Now before we decode the entire production theory, what is this process? There are two type of production: short run production and long run production. So before we understand this short run and long run production, it is important for us to understand PPC or PPF. Now the full form of PPC is production possibility curve. It is also called as production possibility frontier. So let's understand what is production possibility curve, or the synonym is PPF, production possibility frontier. It is a curve which helps us to understand the combination, possible combination of producing one item or more than one item using same set of factor of production. Suppose you have used 5 workers and a piece of land of maybe 500 square feet and same technology of cultivation, right? And same capital. So you can get from this land of cultivation with 5 workers either wheat or you can get, sugar cane. Suppose I have utilized the entire piece of land by remaining factor of production for producing only wheat. I will get X quantity. Suppose I have utilized same set of factor of production with same field land
not for wheat this time, but for sugarcane, I will get Y quantity. And now if I decide, that I need to get both sugarcane as well as wheat factor of production in different situation, different combinations. So I will get X minus 1 wheat and Y minus 2, for example, sugarcane if I want to have both, but not X quantity, not Y quantity. So what are different permutation combinations? What are different type of possibility that as a producer you can get to produce by using same set of factor of production is the study that we try to get to know only reading through PPC and PPF. So friends, as an economist, it is very important for us to understand PPC or PPF, especially when you all people are doing this cost and management accounting, because your entire endeavor is to identify costing, efficiency, how effective the production can be, how effective, how more margins the business can earn. So it plays a significant role in the maximum resource utilization of all the resources during the production process. If we do not understand this permutation and combinations of different possibilities of production, different goods producing from same factors, and in what ratio, in what quantity we can get those goods, then we cannot reach to maximum resource utilization. So PPC and PPF has a significance in understanding the resource utilization, and therefore it helps us to take the important call, which we call as decision making for the use of resource at any given point of time during the process of production. Typically, PPC looks like this. If you see the graph on the quantity of guns is on x-axis, the quantity of butter is mentioned. Now suppose I am using all my factor of production only for producing butter, not for gun, then I can get C quantity of butter but zero quantity of gun. Scenario number 1. Scenario number 2. Okay, now I have decided, now I'm not going to produce all butters. There is a need of gun in the market. So let me use all these resources only for production of guns in the market. So I'm not engaging any of my factor of production for butter production, but for gun production. Then what will happen? I will get B quantity of gun produced. Now suppose I decide, see there are different type of market demand. Some people need butter and some people will need, gun. And I have limited resource. I don't have excess of resource, but I want to sell both because I want to earn profit from both the end and I want to meet the need of both type of consumers. Then what we can do? We can deploy the same factor of production for production of both type of goods. So we get some portion as gun and some portion as B. Now, when we are plotting this different quantities of these goods on the graph, now this curve is actually what is called as PPC, which let us know that you can get either B quantity of gun, or you can get C quantity of gun, or you can get D, where you will get some quantity of gun and some quantity of butter also. So these are three different possibilities of utilizing our resources. Now we can take a call that in which way we should engage our resources for the purpose of production. Either we should go only for guns, B quantity of guns, or we should go for C quantity of butter, or we should go for D quantity where we have B minus something gun and C minus something butter. Okay, so this gives us three different scenarios. Now these three different scenarios are production possibility. And since a curve has been plotted, that's why we call it as production possibility curve or production possibility frontier. In nutshell, it explains us that with the same set of resources, what are different possibilities of getting output. So it's important. It's very significant. Why it is significant? It helps us to maximize our resource
and it also help us to take a justified, well-informed decision about the production. Okay. I have just introduced you what are the factors of production. When I was explaining you the total product, average product, marginal product, all those three terminology. Now let's understand all this factor of production on a larger canvas. Just a moment. हाँ मैडम कल क्लास आ जाऊंगा मैं. ठीक है. Okay. Sorry for interruption. So let's discuss about all this factor of production in detail. There are typically 4 factors of production that you should always understand: land, labor, capital, and organization. Let's deal with each one by one. What is land? Land is just not piece of land. In economics, when we call land, it doesn't mean कि जमीन का एक टुकड़ा 4 एकड़ जमीन वो एक रिसोर्स होगा, वो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया. No, land means anything which nature is giving to us. So about land, it is said that land is always free gift to human society. तो नेचर हमें क्या देता है? पानी देता है, राइट? नेचर क्या देता है हमें? जमीन देता है, फॉरेस्ट देता है, पेड़ देता है. नेचर क्या देता है? यू गेट मिनरल्स. एंड इफ यू सी एनी गुड्स, कुछ भी अपने इर्द गिर्द जो हमें दिखता है, वो ये फ्री गिफ्ट को ही यूटिलाइज करके प्रोड्यूस किया गया है ना. मिनरल्स जो है, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके उसको स्टील में कन्वर्ट किया और स्टील की बाइक बन गई और बहुत सारे काम हो गए. बट द बेसिक फैक्टर इज लैंड ओनली. सो विद लैंड you need to understand it is the free gift which is given to human society by the nature. But there are some restrictions with land. What is it? इसकी quantity fix है. अब जितनी हमारी टेरिटरी है वेस्ट बंगाल की, वो 10 टाइम्स बढ़ तो नहीं सकती है ना, वो तो फिक्स ही रहेगी. तो इस टेरिटरी में जितने मिनरल्स हैं, जितनी क्वांटिटी में उतने ही में रहेंगे, वो उससे ज्यादा बढ़ेंगे नहीं. सो देयर इज यू नो लिमिटेशन ऑफ लैंड फैक्टर. और इसीलिए कहते हैं कि रिसोर्सेस आर स्कार्स इन नेचर एंड ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड. सो लैंड इज फ्री गिफ्ट. फ्री गिफ्ट का मतलब ये नहीं कि पैसा खर्चा नहीं होता. फ्री गिफ्ट का मतलब इसको किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया है, किसी इकोनॉमिस्ट ने, किसी धंधे वाले आदमी ने आके जो है एक फैक्ट्री लगा के जमीन नहीं बनाई. By zameen, by land, I don't mean only the piece of land. I also mean, the water supply. I mean minerals. I mean everything that you get from the nature. Let's come to the second factor, labor. What is labor? We have to differentiate labor and laborer. These are two different things. मजदूरी और मजदूर ये दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को क्लब नहीं करेंगे. So labor means human effort. Labor does not mean human being, but labor mean human effort. Now, what is the about this human effort? We have the human being whom we can utilize for the purpose of production, producing a commodity, goods or services. But this human being is not labor actually. His work is labor for us. So we cannot hire just work. We have to hire the human being only to get the effort done. And that is the problem with labor. Labor cannot be separated with laborer. So what is the feature of labor? Labor is integral part of laborer. हो सकता है हमें उस पूरे आदमी की सारी चीजों की जरूरत नहीं है. कल आपको कोई सीएमए एज ए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट अपने कंपनी में हायर करता है, तो उसको आपके आंख, आपके पांव, बंदूक चलाने की कला से कोई मतलब नहीं है. उसका क्या है कि आपका कॉग्निटिव स्किल कैसा है, आपका कंसेप्चुअलाइजेशन कैसा है, आप फिगर्स को देख के रिस्क बेनिफिट एनालिसिस कैसा कर पाते हो. उसको एफर्ट ही चाहिए. वो उसी का पैसा दे रहा है, लेकिन क्या वो आपसे वो एफर्ट निकाल लेगा क्या? नहीं, that's not possible. So that is the problem with labor. You cannot separate labor with laborer. The second thing, labor has always poor bargaining power. तो जो हमें मजदूर, हमें वेजेस मिलेगा अपने एफर्ट का, उसमें हमारा बहुत ज्यादा स्टेक नहीं होता है. लेबरर का बहुत ज्यादा स्टेक नहीं होता है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई ऑफ लेबरर. लेबरर ज्यादा होंगे, वेजेस जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. नॉर्मली क्या होता है, सप्लाई
लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है कि प्राइस बढ़ेगा तो हम सप्लाई बढ़ा देंगे. अनफॉर्चुनेटली लेबरर डू नॉट हैव एनी कॉल, you know. It doesn't happen when there is a more supply of labor, then you get more wages. It doesn't happen. Why? Because laborer always have, worker always have poor bargaining power. So you cannot separate the two restriction, two features of labor that you need to. Labor cannot be separated from worker. And number two, worker have very poor bargaining power to supply labor. What is the third one? Third factor of production. The third factor of production is called capital. Now, what is capital? Capital is money and those acquired assets because of money that can be repeatedly used in the process of production. तो कैपिटल का मतलब क्या? दो तरह की चीजें, एक तो पैसा सीधा का सीधा, राइट, और दूसरा क्या? पैसों से खरीदी वो चीज जिसका हम इस्तेमाल प्रोडक्शन में बार बार करते हैं, एक बार नहीं, रिपीटेडली करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, you have purchased a machine in your factory where you are working. तो आज आपने 2 करोड़ की एक मशीन लगा दी, राइट. अब ये मशीन केवल 1 महीने तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी, 1 महीने के बाद दूसरे मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में भी उसी मशीन का इस्तेमाल करेंगे, फिर से तो हम उसको परचेज नहीं कर रहे हैं. सेम मशीन इज हेल्पिंग अस. उसके बाद हो सकता है अगले साल भी हमको जब भी जरूरत पड़ेगी, तो जब जब हम प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी ये मशीन हम यूज करेंगे. नाउ दिस मशीन इज नॉट, you know, a good for us, rather it is a capital. Why? Because this asset is being used in production again and again. Whenever we are asserting, whenever we are assessing capital, one mistake we do, that all this movable or immovable assets that comes under the category of capital, we consider it as capital, which is not true. Only those assets can be considered as capital which are used for production. The assets which are used for consumption cannot be called as capital, right? एक और एग्जांपल है, आपने एक कार खरीदी और ये कार खरीदने का पर्पस क्या है आपका? ये कार खरीदने का पर्पस है यार घूमेंगे, कहीं जाएंगे तो अपनी गाड़ी में ट्रेवल करेंगे, दोस्तों को घुमाएंगे, ले जाएंगे. इट इज फॉर योर कंजप्शन. तो ये कार आपकी कैपिटल होगी? नहीं होगी, ये आपकी गुड्स होगी, कंज्यूमेबल गुड्स होगी. लेकिन मान लो मैंने कार खरीदी और मेरे कार खरीदने का पर्पस क्या है? मैं इसको शौकिया तौर पे नहीं ले रहा हूं, बट दिस कार आई एम यूजिंग फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सिंग इट इन द मार्केट. तो ये कम्यूटर्स को एक पॉइंट पे उठाएगी, दूसरी जगह यूज करेगी, मैंने उसको टैक्सी में डाल दिया. तो अब ये कार क्या हो गया? ये प्रोडक्शन में यूज हो रहा है बार बार, कुछ लोगों को एक बार उठा के दूसरी जगह डाल रहा है, फिर दूसरे सेट को ऑफ पीपल को उठा के तीसरी जगह डाल रहा है, फिर and it is getting something out of it. So all those assets which are used in the process of production are capital, but the assets which are used for the purpose of consumption are not capital. So capital are two type of things, right? One, money itself, and the second, those assets which are used repeatedly in the production cycle. Both can be called as capital. What is the beauty of capital? Why capital is one of the important factor of production? We need to understand this. Because it is only capital which is instrumental to procure rest other two factors of production. पैसा नहीं होगा तो हमारे पास लैंड भी नहीं आएगी, लेबर भी नहीं आएगा. कैपिटल नहीं होगा तो इस लैंड और लेबर का हम यूटिलाइजेशन भी नहीं कर पाएंगे प्रोडक्शन में. सो एक्चुअली it is the medium by which we are trying to get other factors of production engaged. Lack of capital will not help us to get land or labor. So capital is the medium. It is the factor vehicle which is helping us to estimate factors of production. So that's why this is also factor production. And the last come the organization or entrepreneur. Now, what does we mean by this? A man or a set of people, human being, जो इकट्ठा होके ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं और डिसीजंस ले रहे हैं कि हम इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को का यूज करके एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जाएंगे.
अलग अलग चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बाजार में बेचेंगे, पैसा कमाएंगे. सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो सारी चीजों को एसिमुलेट करके प्रोडक्शन में एंगेज करने का डिसीजन कौन लेगा, राइट? सो इट इज द एंटरप्रेन्योर or the organization which is serving the decision making role of the production. क्या बनाना है, कितना बनाना है, कितने टाइम में बनाना है, कौन सी टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करना है, कितना पैसा लगाना है, कैसे नेगोशिएट करना है. All these decisions are actually taken by entrepreneur, and while doing so they are taking a lot of risk. Decision is making is not easy, it is always a risk taking. So friends, whenever we try to understand what are the factors of production, we need to understand these are the four important factors of production: land, labor, capital, organization. I think I've explained you all the factors in detail, highlighting their importance, their restrictions. Now let's move to the production cycle, the real production theory. Now actually, whenever we produce or take a decision, take a call of producing any goods or services, the production happens in two stages. Initially, it is called as short run production, and later on, the second stage, which is called as long run production. So what is the short run production and what is this long run production? To understand this, it is very important for all of us to understand law of production first. Okay. If we understand the law of production, then we will understand both the short run production and long run production. So let's understand what is law of production. There are two significant law of production. So any goods or services which are being produced, these two law applies. No? So what are these laws? The first one is called law of variable proportion. It happens in short run production. First understand the law and then you would able to understand short run production. Now what is law of variable proportion production? Law of variable proportion means that whenever you are utilizing all these factors of production, okay, for producing any goods or articles, right? What is the impact on the total output by increasing or reducing the units of factor of production? I had given you the example of, a piece of land and 5 workers working on the land. They can produce, suppose X quantity of wheat or Y quantity of sugarcane. We also try to understand this curve, PPC. Now, law of variable proportion actually help us to understand that suppose in this resources, in this set of resources, if 2 workers are working, खाली पकड़ते हैं, 2 वर्कर काम कर रहे हैं 2 दिन के लिए, right? So I can get, if I am engaging all those workers only for production of gun, I can get B quantity of gun or I can get C quantity of gun. अब बाकी सारे फैक्टर अगर हमने कांस्टेंट रखे और इस वर्कर का यूनिट जो है 2 से 3 बढ़ा दिया, तो भी क्या मुझे बी क्वांटिटी मिलेगी या ज्यादा मिलेगी? तो हो सकता है ज्यादा मिले, हो सकता है कम मिले. नाउ दिस अंडरस्टैंडिंग दिस रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीजिंग the factor of production and the change in output, this can be understood by law of variable proportion. So law of variable proportion explains us the relationship between output and the variable factors of production. अब ये नई चीज आ गई कि variable factor क्या होता है, तो 2 कॉन्सेप्ट और नए आ गए, what is fixed factor and what is variable factor. Let's move to factor of production. आपने एक मशीन इंस्टॉल कर दी, 1 एकड़ जमीन में अपना बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट बना दिया, तो ये तो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ ना, एक बार बनाएंगे, अब ये कैपिटल हो गया, इसको बार बार हम रीयूज कर सकते हैं प्रोडक्शन में.
लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो तो हर गुड्स के लिए आपको बार बार लेना पड़ेगा। वर्कर की यूनिट जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई दैट यू इंटेंड टू प्रोड्यूस or selling in the market, you have to either increase or decrease the worker. So there are some factors which we procure for production, only once. एक बार खरीद लिया और उसके बाद उस फैक्टर में हमको लेने की जरूरत नहीं है, like machine, like the piece of land. But there are many factors that we need to get every time when we are doing production. So variable factors are those factors are required during every new production cycle. And what are the fixed factors? Now, fixed factors are those factors which are not required every time. Once we procure, it remains constant for some period of the time. जब तक कि वो बर्बाद ना हो जाए, मशीन खराब ना हो जाए, तब तक हमें दूसरी मशीन की जरूरत नहीं है, वही मशीन प्रोडक्शन में काम करेगी. Okay. So, what is law of variable proportion? Law of variable proportion explains us that keeping fixed factor intact, whenever we change the variable factor, the output first increases, it reaches to maximum, and then further it declines because of the reason of diminishing marginal product. अब इसको हम जरा ग्राफ से समझते हैं. तो ये हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बताता है? एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन टेल्स अस इफ वी चेंज वेरिएबल फैक्टर, मतलब मशीन चेंज नहीं कर रहे हैं, खाली वर्कर चेंज कर रहे हैं या रॉ मटेरियल चेंज कर रहे हैं. अगर हम इसकी यूनिट बढ़ाते हैं, व्हेनेवर वी इंक्रीज द यूनिट ऑफ एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अदर देन फिक्स्ड वन, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो आउटपुट क्या होगा? जो आउटपुट होगा वो पहले तो बहुत तेजी से बढ़ेगा. सो इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0.2 R, फिर वो मैक्सिमम प्रोडक्शन पे पहुंचेगा, दैट इज द सेकेंड स्टेज. और उसके बाद R के बाद देखो प्रोडक्शन क्या हो रहा है? डिक्लाइन कर रहा है. देन इट रिड्यूसेस. सो व्हाट इज लॉ ऑफ वेरियस variable proportion? Law of variable proportion explains us whenever we increase variable production, the total product that we get during production, first we get at increasing rate, then it reaches to maximum, and then it declines. तो ये हमें 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बताता है. स्टेज नंबर 1 काफी तेजी से ऊपर जा रहा है. स्टेज नंबर 2 या तो कांस्टेंट हो रहा है या उसकी स्पीड जो है प्रोडक्शन की आउटपुट की क्वांटिटी थोड़ी कम होने लग गई है, उतना फास्ट नहीं है. एंड द थर्ड वन इज, अब आप कितना भी लेबर बढ़ा दीजिए, हाँ, 10 की जगह 15 लगा दीजिए, 20 लगा दीजिए, अब क्या होगा? बढ़ने की जगह वो घट रहा है. राइट. सो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. ये तीनों स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जब हम प्रोडक्शन में देखते हैं, ये शॉर्ट रन में ही होता है. क्यों होता है? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. Why this happens? All these 3 stages are why it is happening. Let's understand. Because the marginal product, if you recollect, I explained you these 3 terminology: average product, marginal product, and total product at beginning of our class. So I hope you understand what is marginal product. Now what happens as we keep on increasing any of the variable factor of production? Initially what happens, we get the marginal productivity at a greater rate. तो हमें जो मार्जिनल प्रोडक्ट मिलता है, एक यूनिट बढ़ाया, मान लो 5 मिलके 10 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 11वां जैसे ही डाला तो 12 आना चाहिए, 12 नहीं 14 हो जाता. सो इनिशियली दिस इंक्रीमेंटल राइज इन आउटपुट इज वेरी फास्ट. ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता है. इट रीचेस टू मैक्सिमम. जब ये मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, वी कॉल इट एज स्टेज नंबर 1, एंड ऑफ स्टेज नंबर 1. दैट मीन्स इंक्रीजिंग रेट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है, अब इसका एंड हो गया. एंड देन व्हाट हैपेंस, अब आपने 5 की जगह 6ठा मजदूर डाला, तो 2 की जगह 3 यूनिट आउटपुट बढ़ गया, 7वां डाला मार्जिनल गया, 8वां डाला, 9वां डाला, 2 पे ही रहा. So when it becomes constant, that is the beginning of stage number 2. And when it starts declining, 8वें की जगह आपने 9 डाला, तो मार्जिनल प्रोडक्ट तो आइडियली बढ़ना चाहिए ना,
तो ना बढ़ के वो 2 से भी नीचे आ रहा है। एवरेज हमारा 2 चल रहा था, 5 मजदूर थे, 2 एवरेज प्रोडक्ट आ रहा था। छठा डाला हमने 3 बढ़ गया, सातवां डाला 2.5 बढ़ गया, आठवां डाला 2 आ गया, नौवें पे फिर वो एवरेज पे आ गया 2। अब 10वां जैसे ही डाला तो आइडियली कम से कम 2 तो आना चाहिए, 2 ना आके ये डिक्लाइन होता है, राइट। अब हमको प्रोडक्टिविटी एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एक ही मिल रही है, so we get only 1. Now why it happens? It happens because the fixed factor has reached its maximum utility. जो मशीन हमने लगाया था या जो जमीन का टुकड़ा दिया था उसमें 7 से 8 से ज्यादा मजदूरों का काम ही नहीं है. So the fixed factor has also some constraint. Now this is where the marginal product starts declining. दूसरी वजह क्या हो सकती है? Human being and human effort are two different things. Human being worker, human effort labor. Factor of production क्या है? Labor है, worker नहीं है. लेकिन हमने जब labor की बात की थी, I explained you all people both are inseparable. We cannot separate them. Right? You cannot separate labor from laborer. You cannot separate human effort from worker. So both are inseparable. 8 के बाद जैसे ही 9 डालेंगे तो ठीक है, 8 लोग तो है ना, काम कर लेंगे. एक लेजीनेस, ह्यूमन इंटेंशन जो है, ह्यूमन जो है साइकोलॉजी जो है, ह्यूमन बिहेवियर पिक्चर में आ जाता है. ठीक है यार, 8 लोग काम कर लेगा, हम काहेला काम करें. ऐसा 2 आदमी और सोचेगा तो प्रोडक्शन अल्टीमेटली क्या होगी? मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन करेगा, राइट. इट रीचेस टू लीस्ट लेवल जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट 0 आता है, एंड देन इट्स गोज इन नेगेटिव. Now this is the point where the short run production reaches to the stage number 3. मतलब जब हमारा marginal product इंक्रीमेंट जो है प्रोडक्शन में ना आए, माने आपने मान लो 12 मजदूर लगाए, 12 मजदूर तक हमारा 10 यूनिट से 13 बढ़ा, 14 बढ़ा, 15 बढ़ा, 17 बढ़ा, 18 बढ़ा, और उसके बाद 12 के बाद आपने क्या किया? 18 के बाद जो है वो 19 होना चाहिए ना भाई, ठीक है, एवरेज नहीं आ रहा, कम से कम 1 यूनिट होना चाहिए ना. लेकिन 18 के बाद 17 हो गया, इट मींस नेगेटिव में चला गया. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है, इससे कम जब थे तो ज्यादा प्रोडक्ट हो रहा था, अभी एक नया और यूनिट डाला हमने, मजदूर का एक एक्स्ट्रा डाला, तो भाई 18 की जगह 17 ही हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट माइनस में चला गया. सो व्हेनेवर वी रीच टू द स्टेज वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट इज गोइंग in negative, this is the beginning of stage number 3 of short run production. Okay, and then production moves to long run. So stage 3 क्या है? Actually it is the time when people like you, cost management accountant, should tell the business कि अब हमें fixed जो हमारे एसेट्स हैं उसको भी चेंज करना पड़ेगा. अब हम प्रोडक्शन को जो है और नहीं बढ़ा सकते हैं, खाली अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करके. वी हैव टू चेंज द एंटायर प्रोडक्शन स्केल. तो प्रोडक्शन स्केल में क्या है? चारों फैक्टर्स है. अब हमें सब चीज को चेंज करना पड़ेगा, किसी एक फैक्टर को चेंज करके हम प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते. अब हमें क्या? पूरा स्केल, वी हैव टू चेंज द एंटायर स्केल, then only we will increase the production. So third stage of short run production gives a signal to the people. Now if you want to be in production and in more production, then you have to change the scale. So this is the time when production goes in long run production. I think I could able to explain you all people what is the short run law of variable proportion, its significance. Law of variable proportion means whenever we change any variable factor of production, the total output first increases with increasing rate, then it reaches to maximum, and then it starts declining, while marginal product goes very fast, increasing rate, then at diminishing rate, declining rate, and after some time it becomes negative. So it gives us 3 typical stage of production cycle. Stage number 1, when the total product output is coming very fast. Stage number 2, when it becomes constant and reaches to the maximum. And stage number 3, when even after increasing any of the variable factor, the total output is decreasing. It is not increasing, neither it is constant, it is decreasing. That is the stage number 3. So whenever we reach to stage number 3, for all variable factors, यहाँ पे तो ग्राफ में केवल एक वेरिएबल फैक्टर यूनिट ऑफ लेबर दिख रहा है. इसके बाद मान लो हमें पता चल गया कि मैक्सिमम लेबर इस जमीन पे हम कितना डिप्लॉय कर सकते हैं? 8.
इसी तरह से हम दूसरे फैक्टर्स भी देखेंगे। अच्छा, जमीन का टुकड़ा जो है उसको अगर इंक्रीज करें, लेबर 8 रखें तो हम प्रोडक्शन कितना बढ़ा सकते हैं। तो मान लो हमने 1.5 एकड़ ले लिया और लेबर 8 ही रखे। So likewise, we keep on checking the possibilities of total production by altering variable factors one by one, and we come to know the maximum return in terms of output that we can get by and these variable factors. Then we move to, then our production move to the next stage, which is called long run production. Now, what is long run production? If you recollect, when I am explaining you short run production, I told you in short run there are two type of factors. One is variable factor and the second one is fixed factors. Long run में क्या होता है? There is nothing called variable. हमें पूरा scale ही change करना पड़ता है. तो माने we have to change the input versus machines versus land. हमें पूरा scale of production सारे factor को एक साथ हमें change करना पड़ता है, right? And we are changing them in equal proportion. 2 यूनिट लेबर बढ़ाया तो आधा यूनिट जो हमने इनपुट भी बढ़ा दिया, आधा यूनिट जो हमने कैपिटल का भी बढ़ाया. So when all the factors of production are changed, then the production reaches to long run production. Now there are three scenarios of long run production. Okay. Now these three scenarios are called as थ्री स्टेजेस, थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन. इसमें स्टेज नहीं होता, केवल 3 तरह के आउटपुट हमें मिल सकते हैं. नंबर 1 इंक्रीजिंग रेट, नंबर 2 कांस्टेंट रेट, नंबर 3 डिमिनिशिंग रेट. So when you are changing the entire scale of production, all factors are variable now. There is no fixed factor. Every factor of production is now variable. We are changing all the factors all together. Then what happens? We can get output either at increasing rate or at similar rate, constant rate. कि सब हमने 10% बढ़ाया, 10% आउटपुट भी बढ़ गया. इंक्रीजिंग रेट हमने 10% सारे फैक्टर्स को चेंज किया लेकिन आउटपुट जो है 20% बढ़ गया. और थर्ड डिमिनिशिंग रेट, हमने 10% इनपुट तो सारे चेंज किए लेकिन हमें रिटर्न जो मिल रहा है वो या तो नेगेटिव में मिल रहा है या 2% मिल रहा है. सो वी कैन हैव दीज थ्री सिनेरियोस. Now these three scenarios are called law of to scale. Okay. Scenario हमें 3 different चीजें बताती है. When we get the return in terms of production by changing all factors, all variable factors at increasing rate, what does it mean? That the technology that we have applied is very good. The human effort that we are getting, labor जो मिल रहा है वो good है, right? The quality of raw materials that we have deployed is excellent. So whenever you get increasing return means you have changed the factors at by 10%, but the return you are getting 15% or 20%. This is increasing return. Why it happens? It happens because of some innovative technique, different technique, some great skills. कुछ भी reason हो सकता है. That means we are getting more return. Okay. Constant का ideally कोई reason नहीं है. ये किसी भी वजह से पता नहीं क्यों होता है, but हो जाता है. Right. Now comes the third type of return that we get, diminishing return. Why it happens? There is some problem in the organization. हमने सारे factors variable थे change किए, फिर भी return जो है हमें 10% हमने change किए लेकिन return 5% आ रहा, 10% भी नहीं आ रहा या माइनस में आ रहा. तो इसकी वजह क्या हो सकती है? The reason behind getting diminishing return in long run production is what? That there is some management issue. जो decision maker है time पे decision नहीं ले पा रहा, लोगों में coordination नहीं है, human effort बराबर जिस constant speed से आना चाहिए वो आ नहीं पा रहा. There is misutilization of the resources. So there is serious decision making abilities. There is a problem of organization. Okay, so these are the significance of getting different type of return in long run production. And this is what is called scale. So let's come to the conclusion. There are two factors of production in short run. One is fixed factor of production and second is
variable factor production. What is the return? What is the production that we get in short run production? We get the output as per law of variable proportion. Okay, so initially we get at fast rate, then at constant rate, which reaches to maximum, and then the production declines. Discuss about this. The moment when production declines, it is stage 3, and it is the right term. It is the time from where the production moves to long run production. In long run, what happens? There is nothing called fixed factor. Every factor has to change because all factors has reached to economies of scale. उसका maximum utilization labor का जितना वो भी हमें पता चल गया है. एक land कितना maximum दे सकता है. We reach to the maximization of getting the return. So now if we want to have more production, we have to change all factors, not just one factor. So this exactly happens when our total product starts declining in short run. This is the time when the entire scale has to be changed. In long run production, what happens? We can get 3 different type of returns. Now this is called increasing return rate, constant return rate, diminishing return rate. ऐसा नहीं कि तीनों टाइप दिखेगा, इसमें तीनों में से कोई एक रेट मिल सकता है. क्यों मिलता है? उसकी वजह है. Reason of increasing, the technology is innovated one, there is good skill. Reason for diminishing, there is management issue, decision making issue है, organizing में कुछ problem है, coordination में कुछ issue है. So we can take a call. As a cost management accountant, जब आपकी कंपनी में large scale production चल रहा है, long term production चल रहा है और आपने देखा कि rate diminishing है, तो फटाफट CFO के साथ, CEO के साथ बैठोगे, साहब हमारे यहाँ management issue है, इसको ठीक करना पड़ेगा. Right? Now let's understand some of the other part of production theory, which is called as cost theory. So what is cost? Cost means the total money that is incurred during production. जब हम कोई चीज बनाते हैं तो उसको बनाने में खर्चा कितना आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट. और आप लोग सेम में कर रहे हो, कॉस्ट ही निर्धारण के लिए कर रहे हो, right? So what is the cost involved? What is the cost incurred in producing a goods or a commodity is what is called production cost. In economics, there are 3 types of cost involved: real cost, economic cost, and opportunity cost. ये तीनों अलग-अलग हैं, but as a student of economics, we are only interested in business economics, not economic. Economics में के student रहेंगे तो हमको तीनों cost का analysis करना पड़ेगा, but as a student of costing, we are more interested towards economic cost. For the sake of understanding of the concept, let's understand all the 3 types of cost. Starting from real cost. What is real cost? Real cost implies to the total money that we have incurred in producing X unit of goods, and also the money which we all have not incurred, but it has been indirectly been, leveled to it. For example, आपने जो है 10 यूनिट ऑफ एक कमोडिटी बनाई, एक वर्कर रखा, उसको वेजेस दिया आपने 5000 रुपीज. ठीक है, फैक्ट्री वगैरह लगाने में आपको मान लो जो है छोटा सा डाला तो 50,000 का और खर्चा हो गया, राइट? और बाकी एसेसरीज के खर्चे मान लो हो गया. टोटल खर्चा कितना हो गया आपका? 70,000. बट जहां पे आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया था वो आपका घर था, उसको आपने पैसा तो नहीं दिया, लेकिन वो घर जो है आपने यूज तो किया. सो बुक में तो हमें दिखेगा कि हमने खर्चा किया केवल 70,000, लेकिन वास्तव में यू हैव आल्सो डिप्लॉयड इनडायरेक्ट कॉस्ट बाय यूजिंग योर ओन प्रीमाइस, राइट? आपने टाइम दिया, आप जॉब करते हो, अगर आप उतना ही जॉब करते 4 घंटे तो आपको जो है मान लो सैलरी जो है वो कॉस्ट चला गया. ये सब तो बुक में नहीं दिखेगा. सो व्हाट इज रियल कॉस्ट? रियल कॉस्ट इज all cost which is involved in the process of production, whether we have incurred or it has been, it has been consumed in the production indirectly. So sum total of all this cost is called real cost. Let's understand opportunity cost.
Now what is opportunity cost? Opportunity cost is sacrifice cost. तो वो cost तो नहीं लगा, लेकिन अगर उस चीज को हम दूसरे जगह यूटिलाइज करते तो क्या होता कि उतना हमको आमद हो जाती। तो पहले वाला एग्जांपल 70,000 आपका टोटल कॉस्ट खर्चा हुआ बनाने में, लेकिन आप अगर उस प्रोडक्शन में यूज नहीं होते, आपको तो सैलरी नहीं मिल रही है, आप तो अपना धंधा चला रहे हो, कहीं काम करते तो आपको तो 30,000 पगार मिलता ना। सो 30,000 इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. This is the cost which we have sacrificed for the production. So all the money, all the cost which has been sacrificed in the process of production, otherwise which would had, given us XYZ value. Now this XYZ value becomes the opportunity. Now come to the point, cost here, that is economic cost. So what is economic cost? Now friends, economic cost is sum total of all the three types of cost, right? So what is this three type of cost? Now these three types of costs are explicit cost, implicit cost, and normal profit. Let's understand. Explicit cost. Explicit cost means the cost that we have paid, wages, cost of input. तो वो 50,000 और 10,000 जो आपने दिया 70,000 के टोटल कॉस्टिंग में, वो क्या हो गया आपका explicit cost. What is implicit cost? Implicit cost means the cost which we have not paid but use of our own asset. आपने अपना घर यूज किया, उसका भाड़ा लेते तो हमारा कॉस्ट कितना आता, शायद 5,000 आ जाता. So this 5,000 becomes your implicit cost, which you have directly not incurred, but this cost has been incurred because of rendering some of your assets in the process of production. And what is normal profit? Normal profit is that amount which an entrepreneur, a producer, is bare minimum thing which the producer wants to keep to be in production. तो आपका कुछ इन्फ्लुएंस एरिया तो होगा, ठीक है, आप 30 कहीं पे नौकरी करते 30,000 रुपया मिलता, अभी 30,000 नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ तो मिले ताकि मैं धंधा कर सकूं, नहीं तो लॉस ही होगा तो कहां से करूंगा. सो सपोज ठीक है यार, इनिशियली 5-10,000 भी महीने में आ गए तो मेरा काम कम से कम ये साइकिल चलता रहेगा. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड normal profit, the minimum amount which producer wants to be in business, to be in production. When you do sum total of all three, then it becomes the actual real economic cost. Economic cost is sum total of explicit cost, implicit cost, normal cost. Please bear in mind, in implicit cost we do not consider the opportunity cost. That's a different thing. That's a sacrifice you have made. Okay, so अभी आप काम नहीं कर रहे हो जो आपका 30,000 लॉस हुआ, अगर आप ये छोड़ के दूसरा काम करते तो 30,000 आपको मिलता, लेकिन घर अगर आप अपने लिए यूज कर रहे हो वो आपको करना ही पड़ता, नहीं अगर यही काम करना तो आपको भाड़ा पे लेना पड़ता, तो ये आप अपना एसेट डाल रहे हो वो सेविंग करने के लिए. बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट सेविंग, इट्स अ सेक्रीफाइस. सो यू नीड टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एंड opportunity cost. Opportunity cost is always sacrificed cost and implicit cost is some cost that you have saved जो otherwise incur होता. So when we do sum total of all these three costs, we reach to a amount which is called as economic cost. Now economic cost is the real production cost in business economics. So we must able to understand and evaluate, assess what is the economic cost of our company when we are working in any company. Let's move to a revenue concept now. So what is theory of revenue? Revenue means total money that we get by selling a product in the market. You remember product means goods that we have created for the purpose of selling it in the market. तो जब सेल करेंगे तो कुछ पैसा भी तो मिलेगा, इस पैसे को हम रेवेन्यू बोलते हैं. रेवेन्यू इज नॉट प्रॉफिट, रेवेन्यू इज टोटल मनी, इट्स अ टोटल इनकम, अनदर वर्ड्स टोटल इनकम. उसमें से हम प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट को माइनस करेंगे. ओके, so it is not profit. Revenue is the total return in terms of monetary value that a producer is getting while selling the
अब रेवेन्यू भी तीन तरह के होते हैं, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? मैंने एक दिन में 10 यूनिट बनाया और 10 यूनिट को बाजार में बेच दिया, जितना पैसा 10 यूनिट को बेचने से आया, दैट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, द टोटल मनी दैट वी रिसीव for selling all our produced item is what is called total revenue. What is average revenue? Total revenue divided by number of items. 10 यूनिट बेचा तो पैसा आया, जितना पैसा है उसको हम 10 यूनिट से डिवाइड कर देंगे. So per unit how much revenue we are getting. That is what is called average revenue. And what is marginal revenue? Marginal revenue means what is the additional incremental revenue that we are getting by selling one additional unit, right? So this is what is called marginal revenue. The revenue that we get on selling one additional unit of product or goods in the market is what is called marginal revenue. So with this, I think I tried to explain you as briefly as possible the entire production theory. Now you are requested to tonight to go through your manual, read this, the basic concepts, its explanation, elaboration. I think I have done it. I have explained you all people. What do you have to do? You have to just go through the contents of your manual that has been nicely been written in your book. And you will understand everything. And more precisely, I request you all people to go through the relationship between total product, average product, marginal product, and total revenue, average revenue, and marginal revenue in both the types of production. Long run production में क्या relationship share करते हैं, short run product क्या relationship ये share करते हैं, बड़ा neatly साफ सुथरा, इसमें कुछ डिटेल्स की जरूरत नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा. अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो वो इजीली समझ में आ जाएगा, बट आज ही पढ़ लेंगे, इसको डिले नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये बाउंसर चला जाएगा. सो with this, let's move to market. Very quickly, let's understand what is market, what are different type of market, what are functions of the market. तो हमको तीन चीजें जाननी है market theory में. What is market? Number one. Number two, what is the function of market? And number three, what are the classification of market? What are different type of markets? So let's try to understand all three one by one. Definition: market is a place where goods are sold from producer to buyer. So it is a place of exchange of product between producer and buyer. जो प्रोडक्शन किया हमने वो गोदाम में धप्पा रखने के लिए तो नहीं किया है. वो जब तक कि वो प्रोडक्शन कंज्यूमर की नीड सेटिस्फाई नहीं करेगा, इकोनॉमिक्स पूरा नहीं होगा. क्योंकि इकोनॉमिक्स का पूरा मीनिंग क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स टू मीट द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, बैक्ड बाय ऑफ कोर्स मनी. तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करके प्रोडक्शन तो कर दिया, गोडाउन में भरा है, लेकिन वो कंज्यूमर की नीड तो अभी सेटिस्फाई नहीं हुई ना, सोल्ड नहीं हुआ. So what is a market? Market is a place where this exchange is happening. So one of the important subject area of economics is exchange. So exchange of goods and services between producer and buyer takes place at market. Market is a place where this exchange activity of products and services is happening between the producer and the buyer. तो market क्या करता है? Market हमें दो चीजों में सहायता करता है. And these are called as functions of the market. Market help us determine the price of commodity and it to determine what should be the maximum supply of the goods, ताकि producer judged decision ले सके, well informed decision ले सके कि मुझे इतना ही production करना है. Okay, so these are some of the two most important function of market. It helps you people, cost and management accountants, to serve your company, your business, your clients for price determination and supply determination. On larger term, it helps nation to understand, what could be the market supply situation, what could be the price which my people would be able to pay in the given time, and then they form the policy accordingly. तो जितनी इकोनॉमिकल पॉलिसी बनती है ना, वो ये मार्केट के ये दो फंक्शन को जान के इसको फोरकास्ट करके दे फॉर्म द पॉलिसी कि हाँ भाई
लोगों की जरूरतें पूरी होती जाए। नाउ हाउ दिस फंक्शंस आर मेट। तो एक ये इक्विलिब्रियम का मैंने आपको दिखाया था जब लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई आपको समझाया था। एक बार और उस स्लाइड पे जाएंगे, वही वाला ग्राफ मैंने दोबारा बनाया। यू सी दिस इक्विलिब्रियम, द पॉइंट वेयर द सप्लाई एंड डिमांड आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर, this is point E, equilibrium point. Now, this is how market determines what could be the quantity that can be supplied at any given point of time in the market and what should be the optimum price of the good. अब आप इस point E पे देखो, डिमांड कर्व जो है डी डैश एंड सप्लाई कर्व जो है एस डैश 30 क्वांटिटी पे और 3 रुपए के प्राइस टैग पे मीट कर रहा है, राइट? सो this is the price which market has decided. Of market is for price determination. So as economists, we study this demand and supply curve, and the point where it coincides tells us the possible genuine value of the money for which the money can be exchanged in the market. Price determination हो गया, और ये भी बताता है कि इस प्राइस पे, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस प्राइस पे पॉसिबल सप्लाई कितना होना चाहिए ताकि ना तो डिमांड में स्कैरसिटी रहे, ना मार्केट में स्कैरसिटी रहे, और ना एक्स्ट्रा फ्लो आउट करे, स्टेबल रहे मार्केट, जितना प्रोड्यूस हो रहा उतना बिक रहा। सो वी गेट अ क्वांटिटी ऑफ 30। ओके, अब मान लो प्रोड्यूसर्स ने इस क्वांटिटी से ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, 4 मैन्युफैक्चर हैं, टोटल क्वांटिटी सप्लाई कितनी करनी चाहिए थी, 3 रुपए में अगर बेचना तो 30 रुपया, राइट? तो मान लो प्रोड्यूसर ने जो है 30 का सप्लाई जो है वो बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 40 कर दिया, तो क्या होगा, मार्केट में एक्सेस हो गया, और फिर जो है उस एक्सेस को मीट करने के लिए पूरा डिमांड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। अब इसी एक्सेस को मीट करने के लिए पूरा डिमांड शिफ्ट हो जाएगा, और लोग जो है क्या चाहेंगे कि भाई उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, तो मार्केट फोर्सेस क्या करेगी, प्राइस को और कम कराएगी। बोले 40 खपाना, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि भाई दो प्राइस कम करो, डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्सेस सप्लाई हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगी। सो दे विल रिड्यूस द प्राइस। दिस इज हाउ द प्राइस इज डिटरमाइंड इन द मार्केट। सर आपने तो ये इक्विलिब्रियम बता दिया, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि 30 यूनिट सारे लोग मिलकर सप्लाई करेंगे। नहीं, यू आर राइट। तो फिर मार्केट कैसे प्राइस डिटरमाइन करेगा? मैं वही, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। सपोज द मार्केट फोर्सेस decided that equilibrium price is 3, 3 है जब तक कि मार्केट में 30 यूनिट सप्लाई कर रही है। तो 3 मैन्युफैक्चरर्स हैं, 3 प्रोड्यूसर हैं, तीनों मिलके 30-30 यूनिट सप्लाई कर रहे हैं। जब तक कि मार्केट में 30 यूनिट आ रहा है, प्राइस तो इतना ही रहेगा। लेकिन मान लो एक मैन्युफैक्चरर ने बोला, उसने नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन लगा ली है और उसका प्रोडक्शन 10 यूनिट एक्स्ट्रा हो गया, तो टोटल मार्केट की सप्लाई कितनी होगी, 40 हो गई। 40 हो गई तो मार्केट में एक्सेस हो गया ना, और एक्सेस हो गया, अगले महीने भी 10 यूनिट और एक्स्ट्रा आने वाली है, तो वो क्या करेगा, बिगाड़ेगा क्या कि नहीं? फिर इसी पॉइंट पे हम देखेंगे, दो, वो 40 यूनिट बेचने के लिए प्राइस क्या बता रहा, लॉ ऑफ डिमांड 2। तो अब क्या करेगा, मार्केट बोलेगा नाउ द सप्लाई इन द मार्केट इज 40, सो यू रिड्यूस द प्राइस। तो सारे सेलर को क्या करना पड़ेगा, प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा 2 यूनिट से। ओके, दैट्स हाउ मार्केट डिटरमाइंस द प्राइस। रिवर्स साइड देखते हैं। सपोज आउट ऑफ 3 मैन्युफैक्चर, एक मैन्युफैक्चर के कारखाने में हड़ताल लग गया, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया। अब तो 2 ही मैन्युफैक्चर मार्केट में बचे हैं, तो कल तक वो सामान 3 रुपए में मिलता था बाजार में। ऐसा आप देखते हो ना, वेन एवर यू परचेज एनी गुड्स एंड आर्टिकल, किसी महीने रेट बढ़ जाता है, किसी महीने कम हो जाता है, ये मार्केट डिसाइड करती है। कैसे करती है, दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। तो एक फैक्ट्री में लॉकआउट हो गया, तो अब मार्केट में सप्लाई कितना हो रहा है, 20 यूनिट हो रहा है, 30 तो नहीं हो रहा है। तो जब 30 हो रहा था तब तो 3 रुपया था, लेकिन अब जब 20 हो रहा है तो 20 यूनिट को सेलर जो है वो 3 रुपये में क्यों बेचेगा? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलती है, अगर 20 यूनिट प्राइस सप्लाई हो रहा है, तो अभी कुछ ऐसे लोग हैं बाजार में जो 4 रुपया देने को तैयार हैं। सो व्हाट सेलर विल डू, मार्केट इज टेलिंग द सेलर यू इंक्रीज द प्राइस टू 4। अब जैसे ही 4 रुपए पे जाएगा तो ये 20 यूनिट खत्म हो जाएगी, राइट? और ये मार्केट में बचेगा भी नहीं, खत्म हो जाएगा।
तो मार्केट में कुछ बचेगा। मार्केट डिटरमाइंस प्राइस, तो प्राइस का फ्लक्चुएशन and function of market is price determination. So that is how the price is determined. Whenever there is excess supply or deficient supply, you will find the fluctuation in the price in the of the goods and commodity in the market. आपने देखा हर चीज में ऐसे ही प्राइस ऊपर नीचे होता है. Let's move to classification now. So what are different types of market? तो हमने बात कर ली डेफिनेशन ऑफ मार्केट, व्हाट इज मार्केट, इसका फंक्शन, दो फंक्शन है, सप्लाई डिटरमाइन करना, प्राइस डिटरमाइन करना. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये प्राइस डिटरमिनेशन होता कैसे. नाउ लेट्स मूव टू द क्लासिफिकेशन पार्ट. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट आर देयर? सो यू कैन क्लासिफाई द मार्केट on three bases. The first one is time component, is region, geography. The second one is time, and the third one is competition. So we can classify market on three bases. The first one is on the basis of region, the place, geography. The second one, the duration of exchange, and the third one, the number of peoples who are selling it in the market. So एक एक करके समझते हैं. The first one, on basis of region, you can segregate market in three types: local market, national market, and global market. What is local market? Local market means when both seller and buyer are localized in one area only. तो seller जो produce कर रहा है और buyer जो खरीद रहा है, दोनों जब एक ही जगह पे हो रहा है, तो इसके मार्केट को, ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के मार्केट को हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, अब जितना भी खास करके जो वेजिटेबल्स और जो डेयरीज हैं, जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं होती है, राइट? तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि अफ्रीका में बेटा दूध, डेयरी से दूध आया और इंडिया में बिकने लग जाए. दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब तक वो इंडिया में आएगा तब तक तो वो स्पॉइल हो जाएगा. आई एम टॉकिंग ऑफ फ्रेश मिल्क, not the powder one. So local market is the market where both producer and seller are situated at the same place. तो यहाँ पे क्या होगा, आसपास कलकत्ता के आसपास, मतलब आपके शहर के आसपास जो लोकल डेयरी वाले हैं, उन्हीं का दूध बिकेगा. और परचेज करने वाले कौन होंगे? वो भी मद्रास के नहीं होंगे, जापान के नहीं होंगे, वो भी लोकली मार्केट होंगे, लोकल पीपल ही होंगे. So all those goods and services which are produced and sold at the same location are the goods and products services of local market. Let's understand national market. National market means the producers and the sellers may not have the same location, may be located differently, but within the same regulatory geography. Regulated geography मतलब क्या होगा? इंडिया एक कंट्री. Okay, so now these are the goods and services which are produced in India, sold in India, produced in Japan, sold in Japan. तो कंज्यूमर कहाँ आएगा? कंज्यूमर भी उसी कंट्री का है और प्रोड्यूसर भी उसी कंट्री का. शहर अलग अलग हो सकता है. Now let's come to the global market when there is no boundary, you know. So the goods and services which are sold across the globe. So sellers may be anywhere on the world and the buyer anywhere in the world. Now those goods and services are the goods and services of global market. Let's understand on the basis of time frame. Short term market, very short term market, and long term market. So very short term market, when the consumption means the selling and production of the goods and services happens for very short period of the time. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, अभी आपने कोविड का एक्सपीरियंस किया. ओके, कोविड के टाइम पे क्या हुआ? हमारे पास मास्क नहीं थे, तो ऑल ऑफ सडन क्या हुआ? पूरी इंडस्ट्री एक मास्क बनाने की खड़ी हो गई. इतनी क्वांटिटी में बढ़ने लगे, इतनी क्वांटिटी में बढ़ने लगे कि वी बिकेम थर्ड लार्जेस्ट मास्क प्रोड्यूसर.
अब जैसे कोविड गया वो मास्क आपको रोड धरले पे दिखेंगे नहीं. So there was some situation, some exigency. अब उसकी जरूरत बची नहीं है. Now these goods are the goods and services of very short term market. एक टाइम कंपोनेंट, एक सिचुएशन आती है, एक्सटर्नल सिचुएशन, तो गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है, चली जाती है. ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन की स्कैर्सिटी हो गई, तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी जो दूसरी चीजों की मैन्युफैक्चर करती थी, उन लोगों ने क्या किया, इस वेरी शॉर्ट टर्म के क्राइसिस को मीट करने के लिए उस टाइम, अच्छा उस कंज्यूमर को बार बार उसकी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, उसी टाइम जरूरत पड़ेगी और बाद में फिर उसकी जरूरत भी नहीं है, राइट. So both seller and producer are exchanging goods and services for a very limited, a very short span of time. Maybe for a month, 3 months, 4 months, 6 months. Then it is short-term market, a very short-term market. Short-term market, though the time frame is short, but it is substantially high, maybe for a year, 2 years. Now these goods and services, the producer and sellers are exchanging goods and services. Good term of time, but not for permanent, not permanently. मान लो आपने शर्ट खरीदा, अब शर्ट जो है जीवन भर तो चलने वाला नहीं, 6 महीने, साल भर, 2 साल चलेगा, शॉर्ट टर्म मार्केट. कंज्यूमर भी साल 2 साल के लिए ले रहा है, उसको भी मालूम है 2 साल में चेंज करना. Now come to the long term market, where both producer and seller are exchanging goods and services for substantially longer duration of the time. अब आपने एक घर बना लिया, तो हर महीने तो एक घर नया खरीदोगे नहीं ना. तो जो डेवलपर है, बिल्डर है, वो भी जानता है कि ये खरीदा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदा, 30 साल, 50 साल, 40 साल रहेगा, तो उसमें भी प्रोडक्शन के टाइम में वो सारी चीजें बारीकी रहेगी. और सेलर भी जो परचेज करेगा, इट इज वन टाइम परचेज, मे नॉट बी रिक्वायर्ड एवरी डे, राइट. सो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्सचेंज, you can have 3 types of markets: very short term market and long term market. I think I have explained you all the three with an example too. Now let's move to the last classification. Now what is last classification? Last classification is called as classification on the basis of competition. Sorry, ये spell error है A में. I don't know how it is L. Typographic error हो गया. Read it as competition, not completion. So on basis of number of sellers, number of producer, we can have 2 types of markets. One is perfect competition market and the second one is imperfect competition market. इसको भी जरा फटाफट समझ लेंगे. What is perfect competition and what is imperfect competition? Perfect competition means when there are many sellers, बहुत सारे sellers हैं, बहुत सारे producer हैं, indefinite, it is no restriction. Then we call it as perfect competition. And what is the second important feature of perfect competition? The goods are identical in nature. तो दो चीजें हमें जानी है. Perfect competition का मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूसर एक तो बहुत सारे हैं, नंबर 1, और नंबर 2 क्या है कि जो गुड्स है वो एक जैसा ही है, फोटोकॉपी है, रेप्लिका है, ठीक है. मान लो पेन है, पेंसिल है, तो 10 कंपनियां, 50 कंपनियां, और पेंसिल देखोगे सबकी एक जैसी पेंसिल है, लेकिन वो अलग अलग कंपनी से आ रही है. तो ये पेंसिल क्या हो गया, परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल हो गया, राइट. व्हाट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन? इम्परफेक्ट कंपटीशन मींस द कंपटीशन इज नॉट होमोजेनस. अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, एक ही जैसा प्रोडक्ट है, तो एक ही जैसा प्रोडक्ट होने के कारण जो प्रोडक्ट की नॉलेज होगी वो प्रोड्यूसर को बहुत ज्यादा होती है, राइट. और प्रोड्यूसर जो है वो प्राइस टेकर होता है, प्राइस डिक्टेटर नहीं होता है. मतलब मार्केट फोर्सेस जो प्राइस डिसाइड करेगी वही उसे लेना पड़ेगा, वो अपने तरफ से प्राइस को ऊपर नीचे नहीं कर सकता, उसके हाथ में नहीं होता. इम्परफेक्ट कंपटीशन, नाउ इन दिस केस देयर आर लेस नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स. तो हमको कैसे समझना है ये परफेक्ट और इम्परफेक्ट से समझ. व्हेन द कंपटीशन इज अमंग प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे अथाह सब एक दूसरे से compete कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन. सेकेंड फीचर, प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल इन नेचर. जो ये बेच रहे हैं मार्केट में वो क्या है, जेरोक्स है, रेप्लिका है, दीज आर फोटोकॉपी ऑफ ईच अदर, राइट. इम्परफेक्ट कंपटीशन,
देयर इज नो कंपटीशन और लेस कंपटीशन. इम्परफेक्ट मतलब एक जैसा बैटलफील्ड नहीं है या कम बैटलफील्ड है. So in imperfect competition, we have different categories, typically four. What are these? Let's understand. Monopoly, duopoly, oligopoly, and monopolistic competition. एक एक करके समझते हैं. Monopoly means only one producer. तो वैसा गुड्स जो और कोई नहीं बनाता हो, एक ही आदमी बना रहा है, तो वो क्या करेगा? वो मार्केट लीडर होगा, मार्केट एंजॉय करेगा और प्राइस डिक्टेटर होगा. डियोपोली, डियोपोली में दो प्रोड्यूसर्स, नॉट मैनी बट टू. ओलिगोपोली एक स्यूडो कंपटीशन बना लेते हैं, फ्यू सेट ऑफ पीपल जो आपस में कार्टेल बना लेते हैं. राइट, जैसे सारी पेट्रोल की कंपनीज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 7-8 कंपनियां ही हैं पूरी इंडिया में. राइट, और वो सब के प्राइस देखोगे, आप भारत पेट्रोल पंप पे जाओगे तो भी एक ही प्राइस मिलेगा, इंडियन ऑयल पे जाओगे तो भी एक ही प्राइस मिलेगा, एचपी पे जाओगे तो भी एक ही प्राइस मिलेगा, रूरल एरिया पे जहाँ रिलायंस ने अपने डाले वहां पे भी एक ही प्राइस पे मिलेगा. सो मोर और लेस all people are selling the product at the same price. They form a cartel. Now in imperfect competition, it is the producer who dictate price. In perfect competition, it is the consumer who dictates price. And in imperfect competition, what happens? It is the producer who dictates the price. क्यों? The reason is that there is less competition, less number of producer, right, and more number of buyer. So they enjoy, they can command the supply curve. वो सप्लाई को डिक्टेट कर सकते हैं. मार्केट में नीड है, सप्लाई को क्या कर दिया? कम कर दिया, तो प्राइस अपने आप बढ़ गया. लेना तो लो, नहीं लेना तो मत लो. परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? देयर आर मेनी प्रोड्यूसर्स, तो एक ने अगर प्राइस बढ़ाया तो दूसरे का ले लेंगे. यहाँ तो एक ही है, मोनोपोली है, वही बना रहा है, तो वो जो बोलेगा वही आपको लेना पड़ेगा. दूसरा तो और हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है. ओलिगोपोली में है तो दो चार, लेकिन दोनों सबने क्या किया? आपस में कार्टेल बना लिया, एक अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इसी प्राइस पे हम बेचेंगे चाहे कुछ हो जाए. ओके, दिस ब्रिंग्स अस द थर्ड फीचर ऑफ competitive market. Perfect competition, it is easy to leave the market for the producer and easy to enter. But in imperfect competition, it is not easy to enter, neither it is easy to exit. Okay, तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि कोई भी प्रोड्यूसर कभी भी जो है अपना प्रोडक्शन बंद करके जा सकता है, नहीं बेचना जाओ, और कभी भी कोई आ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? बंद करना तो आपका कॉल है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप मोनोपोली एंजॉय कर रहे हो, तो जैसे जनरल मोटर्स यहाँ से चली गई, अभी जनरल मोटर्स की गाड़ियां नहीं बेचती है, लेकिन 2017 तक उनको सर्विस देना पड़ेगा. स्टिल यू कैन नॉट exit from the market because you enjoyed monopoly. So government puts certain restriction. Government कुछ policies ऐसे restriction दे देती है कि ठीक है आप बिजनेस नहीं करोगे, लेकिन फिर भी आपको मार्केट में थोड़ी दिन रहना पड़ेगा. आफ्टर सेल सर्विस कार का कौन देगा? तुम तो अपना धंधा बंद करके चले गए, और कल तक जो बेचा है वो कम से कम 10 साल तो उसकी लाइफ है, 10 साल कौन उसको सर्व करेगा? So there is not so easy exit, but there is another important benefit. So this is difficulty for imperfect producers, but what is the benefit? There is not easy entry. कोई भी उस मार्केट में एंटर भी नहीं कर सकता. They have to take patent, right? वो इतना कंपटीशन तगड़ा कर देते हैं, अकेले में इतना थ्रू अवे रेट में डाल देते हैं कि कोई नया आएगा तो उसका कॉस्टिंग भी नहीं आता, तो वैसे वाइंड अप करके चला जाता है. So it is very difficult for a new entrant to enter imperfect competition market, whether it is monopoly, duopoly or oligopoly. फोर्थ वाला ऐसा नहीं है. So there is last category of imperfect competition market which is called as monopolistic competition. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि there are many. मोनोपोली में क्या था? Only one. परफेक्ट कंपटीशन में क्या था? Many seller and many buyer. Monopolistic is just like perfect competition with a difference. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? इट्स जस्ट लाइक अ परफेक्ट कंपटीशन बट विद अ डिफरेंस. परफेक्ट कंपटीशन में क्या था? द प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल, रेप्लिका होते हैं, एक जैसे होते हैं. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल विद डिफरेंशिएशन. माने होते तो एक जैसे हैं, लेकिन उसमें कुछ अंतर होता है, थोड़ा थोड़ा सा एक हल्का सा बारीक सा अंतर डाल देते हैं, जिससे कि कंपटीशन बना रहे.
फॉर एग्जाम्पल मोटरसाइकिल 150 सीसी की बजाज भी बनाती है, टीवीएस भी बनाती है, बहुत सारी कंपनियां बनाती है। अब इंजन तो वही 150 सीसी का लगा हुआ है, लेकिन एक के आगे उसका मॉडल का डिजाइन थोड़ा चेंज कर दिया, एक का जो है वो लीवर जो है लेफ्ट साइड में डाल दिया, एक में फुटरेस्ट। सो दे क्रिएट अ स्मॉल डिफरेंशिएशन, राइट? अदरवाइज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज जस्ट लाइक परफेक्ट कंपटीशन। कहाँ पे डिफरेंस आ जाता है? डिफरेंस यहीं पे आ जाता है कि दे क्रिएट अ माइनर डिफरेंशिएशन। व्हाई दे क्रिएट माइनर डिफरेंशिएशन? सो दैट दे आर नॉट प्राइस टेकर। परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्केट प्राइस देगा वही प्राइस हमको लेना पड़ेगा। मोनोपोलिस्टिक में एक थोड़ा सा डिफरेंस देके बोलेंगे हमारा हीरो होंडा से ज्यादा अच्छा है, वही इंजन सब कुछ वही, थोड़ा टायर का चौड़ाई बढ़ा दिया है ना, ग्रिप अच्छा कर दिया, सो यू गेट एक्स्ट्रा कंफर्ट, बट द बेसिक प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर रिमेन सेम. There is bit of product segmentation, right? So this is about the markets on the basis of competition. I think that would be all for today. इससे ज्यादा इकोनॉमिक्स आप लोग झेल भी नहीं पाओगे. But only request to you all people who are attending the class or otherwise streaming this live session later on at their convenient time. The session of so much of time period, I request you all people, please go through the manual, read all this stuff. Two things I want you to do at your home. There is some restriction of the time. We have restricted time in which we have to cover the entire paper, so I cannot go through the details. The basic concepts was important to make you all people aware. तो आपको घर में क्या करना है? दो काम ये करना है. पहला तो आपको लॉन्ग रन प्रोडक्शन और शॉर्ट रन प्रोडक्शन में समझ में नहीं आएगा, फिर अपना सर फोड़ेंगे. So I sincerely urge you all people, please go through your manual sincerely today only. Please do not postpone it for some other day and go through everything that we have discussed. I think we have covered most of the stuff of your paper 4 of business economics part. Money, that means distribution part is left, money and banking, and then we will start the management. So in next class, I'll be covering up the money and banking theory stuff, and we will have an introduction of management so that we can complete on the last session, the complete management part. Thank you all. I hope slides are there, so you friends, please do not mug up this slide. The purpose of this slide is just to know the concepts, the terminology, and it has to be comprehended well through manuals only. That's all from my side. Do well. Good night. Thank you. Okay. हाँ जी सर. सेशन एंड कर रहा सर. Anyone asking question? So good night, do all everyone. The slides are there for your reference. I want you to go through it. Please do well. आप सर सेशन बंद कर सकते हैं, मेरी तरफ से हो गया. ओके सर. ओके सर. आई एम गोइंग टू कंक्लूड द सेशन सर. यस यस. ये स्लाइड आप अपलोड करते हैं ना, अगर किसी को चाहिए वो डाउनलोड कर सकता है ना. हाँ सर. हाँ सर. हाँ ठीक है.